And the empirical study which these learned authors very boldly have carried by interviewing, by contacting personally large number of victims, reveal, I ask myself a question: are we going back to those uncivilized days which we have shunned centuries ago? Are we back to those dark days which we have given up centuries ago? We gave ourselves constitution, a constitution which provides the right to life and liberty under Article 21 of the Constitution. When Fundamental Right case 1976 was being argued, the Attorney General of India made submission. Sir, Attorney General of India said that it is emergency. District magistrate can order killing of anybody. At that time, Supreme Court upheld this. But within 1.5 years, constitutional amendment brought and the judgment of the Supreme Court was annulled. And the right to personal liberty, freedom and life, not even during emergency it could be suspended now. It was ensured by the constitutional framer, by the parliamentarian, that right to life is never suspended. So friends, if the right to life is there, it can be enjoyed only during life. But when the situation is such, when the life has been sniffed out, when person is killed, what right to life is there? In this book, all the learned authors have written various, for example, 2nd of May, one girl in front of her father, at page 18, a detailed description has been given. A detailed description has been given, and after reading these pages, your head hang in shame. And then see the case of Tirlochan Mahantu. He was done to death. Can you silence the voice of the people by eliminating the body? It will echo in much more sound, much more bigger voice. You cannot silence the voice of the people like this. Then at page 39, 10-year-old girl case has been given. Then 14-year-old girl gang raped. A large number of cases which have been referred to National Human Rights Commission. I would like to mention the report which was submitted by the National Human Rights Commission on 21st of July 2021 to the 12th of July 2021 to the Calcutta High Court. And this report opens with a statement which is eye-opener. The report starts, the situation in the state of West Bengal is manifestation of law of ruler instead of rule of law. This is a very profound statement. If you start thinking, the constitution is completely abrogated. And other 2-3 paragraphs I will read from this report. The violent incident in the state of West Bengal reflect the appalling apathy of the state government towards the plight of victims. This was retributive violence
by supporter of the ruling party against supporter of the main opposition party. It resulted in the disruption of life and livelihood of thousands of people and their economic strangulation. The local police has been grossly derelict, if not complicit, in this violence. To compound the problem, violence and intimidation continued. There is palpable fear among victims against police and goons of the ruling party. Many displaced persons have not yet been able to return to their homes and resume their normal life and livelihood. There have been several sexual offences, but victims are scared to speak out. Loss of faith in state administration amongst victims is very evident. This report has as many as 12 annexures. It runs into 3,500 pages. And some of the complaints, very few of them, have been indexed in this book also. I think it needs to be brought in front of the public, this report of the National Human Rights Commission, because National Human Rights Commission has no political agenda. National Human Rights Commission works according to the mandate of the Constitution. National Human Rights Commission was asked by the full bench of the High Court to come and submit the report. It is a non-political agency, non-political organization created by 1993 Act. Therefore, politics you can do, no issue. There is adequate space given in the Constitution for politics. But for politics of murder, politics of rape, that is impermissible. As a constitutional functionary, I say with all responsibility, there is adequate space. Make a program for economic progress of the country. Convince the general public. Let them vote for the party which presents the best program for the advancement of the socio-economic strata of the society. But politics of murder, politics of rape, politics of elimination, that politics is neither permissible, it is very, very lowest. I think if such like politics is allowed to be permeated, then the dark ages are going to come back. Let us lit a lamp, however small it may be, to extinguish this darkness. Let us, man, become a medicine for the other man, rather than killing. Let us shun violence. Let us not indulge in this type of politics. It is very, very painful and soul-stirring, the incidents which have been captured in the book, The Democracy in Coma. I wish to greet the authors for their bold research and their interviews going personally to them. There are many things which in 5 volumes of the NHRC reports are contained. These reports shall not remain in the thickets of the report itself. 3,500 pages are there. It must be brought before the general public so that they may know that an independent body has given these findings with evidence. So those who take oath of the Constitution must perform and come up to that oath. Schedule 3 of the Constitution provide for taking oath, whether it is a minister, whether it is a judge, chief justice, chief minister, or even member parliament, assembly. They take the oath of upholding the Constitution as established by law. Let us uphold that oath. Let us be medicine. Man should be medicine to the other man. With these few words,
I express my gratitude to the organizer for giving me this opportunity to express my view. Thank you so much. Thank you, sir, for your kind words about the book and sharing your views with us all. सर्वे भवन्तु सुखिनः। अब कीनोट एड्रेस हेतु मैं आमंत्रित करती हूं हमारे आज के मुख्य अतिथि आदरणीय श्री जेपी नड्डा जी को, नेशनल प्रेसिडेंट भारतीय जनता पार्टी श्री जेपी नड्डा जी। Mr. Justice M.M. Kumar ji, former Chief Justice of J&K High Court, Srimati Sonali Chittalkar ji, the researcher and academician from the University of Delhi, my colleague Shri Amit Malviya ji, in charge of IT cell Bharatiya Janata Party and co-in charge of West Bengal Bharatiya Janata Party, and Shri 𝐒𝐤𝐥𝐞𝐬 ji, Advocate Supreme Court, distinguished gathering here, this august gathering, ladies and gentlemen, and friends from the media, print media and electronic media. It is indeed a matter of great opportunity for me to be here to launch the book, which is Democracy in Coma, Silenced Voices for Women Victims in Bengal. It is an opportunity because I have been associated with the incidents which have taken place in Bengal. I have been a very person who has been closely watching what is happening in West Bengal. So giving me this opportunity to launch this book, I am really grateful and thankful to the organizers for giving me this opportunity. And I must appreciate the work done by Sonali ji, Shruti Mishra ji, Vijita ji and Monica Agrawal ji. The boldness they have shown and the commitment they have shown by coming out with this book, I really congratulate all of them for doing a good job. And one more thing, that you have fought for the dignity of women. And when women fights for the dignity of women, I think it gains a lot of strength. So your efforts are not going to go waste. It is going to be really giving the desired results in the society. That is what I feel. Friends, when I talk about democracy in coma, silenced voices of women victims in Bengal, I feel very disturbed, and I also feel the situation in West Bengal which is facing. You see, we the country is known for the mother of democracy. And there was a very famous saying that what Bengal thinks today, India thinks tomorrow. So that socially, culturally, ethically, Bengal has been a leader in many ways. And many literary figures, many people in the spiritual world, many saints from West Bengal who have given direction to the country. If I talk about the social reformers, we find that the leaders have been from Bengal. If I talk about political reformers, we find leaders from Bengal. And that is why the famous saying was that what Bengal thinks today, India thinks tomorrow. But the situation and plight has been something which pains a lot, which gives us a lot of pain. And it is very painful to understand what is happening in West Bengal. And so when the authors have tried to narrate the incidents, and as rightly said by Sonali ji, that this is not a story. These are incidents. These are the factual incidents which have been quoted. So when we go through all this, we find in what shape and in what condition Bengal is very painful, and we have to understand the basics which the present TMC, Trinamool Congress, and the Mamata Banerjee government is doing, that we have to understand. On one hand, we say that it is
mother of democracy. On the other hand, we find that the Mamta ji's style of functioning is to silence the opposition, to see to it that there is no opposition. And for that, all types of activities, all types of initiatives she takes in the government to see to it that the opposition is silenced. And when I talk about, I always say that Bhavishyater Bhoot, a ghost of future, a film, where it talks about Mamta ji's style of functioning. So that is called off from the theatres. If I talk about Teen Kanya screening, which is more or less, which talks about the Park Street rape case, so that is also banned. If I talk about the cartoonist who was jailed, and if I talk about recently the Kerala story. Now, by banning such films, if I talk about the Kerala story, I would like to share with you. It is a very unique type of terrorism which is taking place. Very unique. You see, in terrorism you find bombs, you find pistols, you find automatic machines, you find sound, a lot of sound. But here terrorism is taking place where there is no sound. And it is a direct help to ISIS. It is a direct help to ISIS. And it has got nothing to do with any religion. It has got nothing to do with any state. It is something which is related to the nation and it is related to world at large. You see, people are going to ISIS from Australia, people are going from England, people are going from France, from Europe, from America. So it's a world terrorist problem. But here in India, we the champions of democracy try to ban the film, which speaks how things are going on. And I also, even the Kerala ex-chief minister has shown his concern. Even one of the justices of, Mr. Justice of Kerala High Court has shown concern. But Mamta ji is the champion, one of the champions, to ban this Kerala story that we have to understand. Shyama Prasad Mukherjee, we all know. And I, coming from as the national president of Bharatiya Janata Party, it becomes my responsibility to share with you that what he thought about democracy and what he thought about the ethos of India and what he thought how the democracy should function. He said in the Parliament on 6 December 1950, I quote, "I have nothing to say against communist philosophy as such. The Indian people may decide to adopt whatever ism they would like to adopt. I am not referring to any ideologies for which England or America may stand or their sins of omission and commission. But there are certain fundamental and basic ideologies for which India has stood and even stands today. We stand for freedom, we stand for freedom of expression, we stand for freedom of thought, we stand for freedom of religion, and our constitution is based on sound principles of democracy." This he spoke in 1950, on 6th December in Parliament. That means the founding fathers of the constitution were very clear about it, that how we have to protect democracy and how we have to see to it that the democracy is on a very solid ground and it is not intimidated or taken for a ride or something of that sort. But yes, he again says that India will not therefore and cannot accept the principles attached to totalitarian and dictatorship. So we have rejected this totalitarian society, dictatorship society. इसको हम लोगों ने रिजेक्ट कर दिया और डेमोक्रेसी के साउंड ग्राउंड पर कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर हम लोगों ने खड़ा करने का प्रयास किया। लेकिन जो घटनाएं घटती हैं वो घटनाएं अपने आप में बहुत ही चिंताजनक है एंड इट इज रियली painful and I feel that it is a very serious issue which needs, and we need that the society in general
should we take this issue among the people? That is what I feel. When I talk about Bengal violence, मैं बैठा मैंने अमित से बोला कि मुझे आप बंगाल के वायलेंस के बारे में बता रहे हो, मैं तो खुद सबसे पहला भुक्तभोगी तो मैं ही हूं. I am the first. When the campaign started, the first day, the first attack was on me when I was going to Diamond Harbour. और देखिए, मतलब आपसे मैं शेयर करना चाहूंगा कि किस कोल्ड ब्लडेड तरीके से ये एक्टिविटी होती है. Everybody knows about my security also. I was well secured. राइट हैंड साइड में बसें लगा दी जाती हैं लाइन से, so that no vehicle can overtake. मेरे सामने एक बस लगा दी जाती है, उसको स्लो किया जाता है, उसके पीछे मेरी गाड़ी होती है और इसके बीच में मेरी सिक्योरिटी की गाड़ी, वो उसको बस वाला आगे पहले निकलने देता है, फिर बीच में घुसाता है, so that they can also not come and protect me. And close range से फिर मेरे पर अटैक होता है. Had there not been a bulletproof vehicle, which they did not anticipate actually, और मेरे सिवाय सारी गाड़ियां तोड़ी जाती हैं, सभी इंजर्ड होते हैं, तो मैं तो इसका भुक्तभोगी हूं. मैंने तो देखा. एंड इफ दिस कैन हैपन विथ मी, व्हाट इज द कॉमन मैन्स प्लाइट? मैंने उस दिन यही तो पूछा ममता जी से कि अगर यह स्थिति आप और आपके पूज्य भतीजे मेरे साथ करते हैं, तो आप कॉमन मैन के साथ कैसे बिहेव करते होंगे? इसका ये एग्जाम्पल तो मुझे बताने की कोई जरूरत नहीं है. रिजल्ट्स आने के शाम को ही हमारे ऑफिसेस जलने लग गए और मैंने उसी समय समझ लिया कि इनको ये बदला लेंगे और यह नहीं, इनको यह पसंद नहीं आया कि कोई पार्टी इतनी तीव्र गति से बढ़कर आज 77 एमएलए तक पहुंच गई एक ही लीप में. दिस दे हैव नॉट बीन एबल टू डाइजेस्ट और ये अटैक होगा. और मैंने प्रधानमंत्री जी से बातचीत की, हमारे सीनियर लीडर्स से बातचीत की और मैंने कहा आई वुड लाइक टू गो टू वेस्ट बंगाल एंड प्राइम मिनिस्टर सेड दैट यू शुड गो एंड आई विजिटेड दोस प्लेसेस. मैं क्या नरेट करूंगा आपको? एक ही इंसिडेंट सिर्फ नरेट करता हूं. एक लड़का है अभिजीत सरकार, उसका डेस्क से 30 मिनट्स बिफोर का वीडियो, 30 मिनट्स या 1 आवर, वेयर ही इज क्राइंग. उसके पेट को मार दिया गया है और वो प्रेग्नेंट थी. उसके पपी को निकाल करके मारा गया है, उसको देख करके वो रो रहा है और वो कह रहा है कि आमी बचबो ना, हम बचेंगे नहीं. एमएलए और उनके जो हेंचमैन है वो हमको समाप्त करेंगे. और उसकी डेथ होती है, उसको मारा जाता है और उसका वीडियो वायरल भी हुआ, सब लोगों ने देखा भी. और आप मेरी स्थिति सोचिए कि मैं उसी घर के नीचे वाले कमरे में उसकी मां को संतावना दे रहा हूं और मां बोल रही है कि मेरा बच्चा भाग गया है, उसको बताया नहीं गया है कि ही इज नो मोर. एक भाई पहले भाग गया है और वो बोल रहा है मेरे बच्चे को ढूंढ के लाओ, मेरे बच्चे को ढूंढ के लाओ, जहां भी है वो ठीक होना चाहिए वगैरह वगैरह. आप सोचिए वो शाम हमने कैसे गुजारी होगी, क्या स्थिति हुई है, किस तरीके से ये घटनाएं घटी हैं. फिर आप बोलते हो कि वहां रूल ऑफ लॉ है. मैं गरीब लोग बेचारे जो शेड्स में रहते हैं, उनके घरों को तोड़ा गया है. आप इसमें कुछ फोटोग्राफ्स दिए हैं, वो आपको देखने को मिलेगा. हैंगिंग के इंसिडेंट्स सडनली बीजेपी के बढ़ जाते हैं. बीजेपी के लोग रात को 10 बजे हैंग हालत में मिला है. यानी ये एक नया तरीका ढूंढ लिया गया है वायलेंस करने का और केस को शट करने का और उसको समाप्त करने का. मैं आपके सामने कुछ आंकड़े रखना चाहता हूं जो मैंने उस समय कलेक्ट किए थे. पोस्ट पॉल रिजल्ट्स के 2021 मई में टोटल इंसिडेंट्स 12,000 which happened in Bengal. 80,000 people displaced. Total number of murders 57.
Incidents of major sexual assault 123. CBI registered cases 47. Rape and attempted to rape 11. Arrested CBI more than 300. Victims recorded statement before the National Commission 2448. ये प्लाइट है और जिस तरीके की सिचुएशन हम सबको देखने को मिली है, मैं इसमें वो कैंप्स की बात नहीं, 191 कैंप्स लगाने पड़े हैं हमको, 1 लाख से ज्यादा जनसंख्या के लोगों को कैंप्स में रखा गया है। कई लोग अभी भी घर वापस नहीं पहुंच पाए हैं, दे आर नॉट एबल टू रीच देयर होम इवन टुडे, आज भी स्थिति है। तो ये सारी सिचुएशन आज आकर के खड़ी हुई है और मैं फिर से एक बार बधाई दूंगा हमारे ऑथर्स को जिन्होंने महिला सशक्तिकरण का काम आपने पकड़ा है और आपने इस काम को उठाया है। आप बधाई के पात्र हैं और आप बहुत ही हौसले के पात्र हैं। और ये डेमोक्रेसी इन कोमा की किताब जो है वो सब लोगों को पढ़नी चाहिए, जानना चाहिए। और बंगाल में हम बदले की बात नहीं कहते, लेकिन हम बदलाव की बात करते हैं। वहाँ बदलाव चाहिए और आप लोगों की ताकत से जरूर हम कर सकेंगे। आप देखिए वहाँ हाई कोर्ट के ऑर्डर पर एसआईटी बैठी, 7000 केस रजिस्टर हुए एंड 550 केसेस हैव बीन टेकन बाय एसआईटी। व्हाट इज द, ये लॉलेसनेस का और ये स्टेट मशीनरी का क्रम्बल डाउन नहीं तो और क्या है। ये स्थिति आकर के खड़ी हुई है। और जैसा कि अभी सोनाली जी ने बताया था कि माँ माटी मानुष की बात करने वाले, न माँ बची न माटी बची और मानुष तो रहा ही नहीं बेचारा, वो तो जो उसकी हालत हुई है। आप देखिए, मैं अगर आपके साथ चर्चा करूं, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की तरफ से जब हम चर्चा करते हैं तो क्राइम अगेंस्ट वुमेन इन वेस्ट बंगाल इज 74.6%. If I talk about it, it is on the top on acid attacks. वेस्ट बंगाल सबसे ज्यादा एसिड अटैक में। उसी तरीके से हीनियस क्राइम में अगेंस्ट वुमेन ऑफ 18 to 30 years, ये उसमें बंगाल इज फर्स्ट। 4th हाईएस्ट नंबर ऑफ डाउरी डेथ्स, ये बंगाल की स्थिति है जो हमको समझनी चाहिए। और अगर हम वैसे भी बोले, फेडरल स्ट्रक्चर की दृष्टि से बोले, प्रधानमंत्री आवास योजना घपला, आयुष्मान भारत 4,70,00,000 लोगों को प्रधानमंत्री मोदी जी 5 लाख रुपए का हेल्थ कवर देना चाहते हैं, नहीं इंप्लीमेंट किया। डिप्राइव्ड, व्हाट इज द नंबर? 4,70,00,000 पीपल। हु आर दे? रिक्शा वाला, रेडी वाला, ठेले वाला, फेरी वाला, सब्जी वाला, बस का ड्राइवर, बस का क्लीनर, ट्रक का ड्राइवर, ट्रक का क्लीनर, लिफ्ट मैन, रैग पिकर, ऐसे गरीब लोगों को मोदी जी 5 लाख रुपए एवरी ईयर हेल्थ कवर के लिए दे रहे हैं। एंड वेस्ट बंगाल इज डिप्राइव्ड एंड द नंबर इज 4,70,00,000। ये स्टेट है, ये स्थिति है। उसी तरीके से पोषण का फंड डाइवर्ट कर देते हैं। मनरेगा का फेक जॉब कार्ड्स के तहत एक बहुत बड़ा स्कैम होता है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट नहीं दिया जाता है। फिर ममता जी ये भी चिल्लाती हैं कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है। तुम पैसे का हिसाब न दो, आप यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट न दो, आप भारत के कानून को ना मानो और फिर ऊपर से बोलो कि हमारे साथ अन्याय होता है। जितना वेस्ट बंगाल को हम लोगों ने देने का प्रयास किया है और जितना मिस यूटिलाइजेशन हुआ है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में भी आप सबको मालूम है कि बहुत बड़ा उसमें भी गड़बड़ी हुई है। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पर हुई हैं और ये सब हमको देखने को मिला है। मैं एक ही बात कहूँगा कि सच में डेमोक्रेसी नाम की चीज़ वहाँ है नहीं और डेमोक्रेसी इन कोमा ये कहना बिल्कुल सही है, ये सही शब्द का उपयोग है, प्रयोग है। हमें लोगों को जागृत करना पड़ेगा और बंगाल का जो प्राइड है उस प्राइड को हमको स्थापित करना पड़ेगा और हमारे बंगाली भाइयों को जो आज एक लॉलेसनेस के सिचुएशन में जी रहे हैं उनको लाइफ विद डिग्निटी रहने का अधिकार मिले,
इसकी हमको चिंता करनी पड़ेगी। मैं एक बात और आप सबसे ये ज़रूर शेयर करूँगा, इसके अंदर ह्यूमन राइट्स को दिए गए एप्लीकेशंस की लिस्ट भी है जिसमें पूरे इंसिडेंट्स लिखी हुई हैं। मैं चाहूँगा बाकी आप पढ़ें सो पढ़ें, लेकिन उसको ज़रूर पढ़ें कि किस किस ने के साथ क्या क्या घटनाएं घटी हैं, कैसे टीएमसी के कार्यकर्ता बिहेव किए, कैसे लोगों के साथ अमानवीय व्यवहार किया गया, कैसे लोग महीनों तक घर में डर कर दुबक करके रहे, कैसे महिलाओं को और बच्चियों को बारंबार सेक्सुअल असॉल्ट किया गया है और कैसे उनको धमकाया गया है और कैसे उनको कहा गया है कि पुलिस के पास जाओगे तो बचोगे नहीं। ये फैक्चुअल, दीज आर ऑल रिकॉर्ड्स जो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के पास हैं। इसको हमको इसमें ऑथर्स ने शेयर किया है। हमको पढ़ना चाहिए, देखना चाहिए, जानना चाहिए और बीइंग रिस्पॉन्सिबल सिटीजन। और आप सब इस ऑगस्ट गैदरिंग में जो आए हैं, आप सब लीडर्स हैं, आप सब इन्फ्लुएंसर्स हैं, आपका समाज में एक स्थान है, आप ज़रूर इन बातों को आगे रखिए। मैं फिर से आयोजकों को इसके लिए बधाई देता हूं और हमारे ऑथर्स को मैं बधाई देता हूं जिन्होंने ये प्रयास किया है। हम एक राजनीतिक दल के तरीके से तो हम इस लड़ाई को लड़ेंगे ही लड़ेंगे और हम इस लड़ाई को आगे तक ले जाएंगे, लेकिन आप लोगों ने, समाज के एक इंडिपेंडेंट वर्ग ने इसको लीगल रेमेडी के साथ आपने इस लड़ाई को लड़ी है। मैं आपको बधाई देता हूं। कबीर जी, आपको भी बधाई देता हूं जिन्होंने बड़ी मेहनत के साथ। मैं जस्टिस MM कुमार जी को भी बधाई देता हूं जिन्होंने इस आवाज़ को उठाया है। और फिर से अंत में महिला शक्ति को नमन करते हुए हमारी ऑथर्स जिन्होंने इसको एक रूप दिया है और ये लड़ाई को अपने हाथ में लिया है, उनको भी मैं बधाई देता हूं और मुझे आपने आने का मौका दिया। आई एम रियली थैंकफुल टू दी ऑर्गेनाइजेशन। बहुत बहुत धन्यवाद।